Are you excited for your transformation? You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Returning. What's up guys, this is Abhishek Sawan aka Browwiz India and welcome to my channel. I'm starting my video. In this video I'm gonna show you how to work with the eyebrows because we are doing a ombre powder brows. Step by step जाते हैं. I'll show you how to sharpen that pencil so it will be easy for you to understand. उसका जो cover है उसको हम लोग अच्छे से निकाल देंगे. This is the blade that I'm using. So इसको दोनों तरफ से हमें क्लीन करना है. When we do that, we get this kind of points. ये हमें चाहिए. इसकी वजह से हम लोग thin lines create कर सकते हैं. Okay, let's start working with the mapping first. See, मुझे ऐसा लगता है कि आईब्रो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैपिंग होता है. अगर आपका मैपिंग अच्छा है 60% ऑफ द वर्क इज़ डन बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं. हम लोग लिफ्ट अप कर लेते हैं ब्राउज को, वी ऐड टेल पार्ट, वी ऐड द आर्च पार्ट एंड देन जैसे क्लाइंट का डिज़ायर होता है दे वांट टू लुक लिटिल बिट मोर शार्पर और मे बी आर्ची लुक that we can give it to it. When you are working with the eyebrow area, let's always understand this is our face and then we are dividing the face into two parts. So this is our center point. Lip का जो cupid bow होता है वो हमेशा center में होता है. If you go according to the nose, it is gonna go a little bit crooked because most of the people have a crooked nose, you know. So this is the point and I'm just gonna take it here and that's my point. अभी अगर आप देखोगे सेंटर में भी पता चलेगा कि this brow is little bit inner side and this brow is outer side. तो इसी में हमें पता चल गया कि eyebrows ऊपर नीचे है. What I'm gonna do, keep my pencil onto the nostril area. This is the nostril area. यहाँ पे मैं सेंटर पे नहीं रख रहा, यहाँ पे प्रेस नहीं कर रहा, just on the this nostril area and then just going with the one line here. Same goes here. Let's keep it straight. So I always sticks this kind of sticks to measure this thing. So I'm going to use this. This is a measurement. I'm going to use it here. These three lines are very important. तो इसमें पता चलेगा कि brows are starting from this area. Now we need to have a tail side कि हमें brows कहाँ पे end करना है वो देखना है. Okay, so we have to understand this sections. I'm going to use a golden ratio scale. This is called golden ratio scale. Basically ये जो scale होता है उसमें this is 100%, this is 60 and this is 40. So it's based on a 60-40 ratio. And imagine like our Indian brows are also based on 60-40. But how I use it, I'll show you. Before that, I'm using it as a scale. So when we want a third line here towards the tail, right? So what I'm going to do, keep it in the center of the cupid bow, corner of the nose area, and then corner of the eye. And I'm going to take a one line. This is the one line that I need from here to here. And I'm going to do it from the other side also. So we got two lines here. I'll just measure this thing. 1, 2, 3. And then 1, 2, 3. It's on the same side. Now I'm gonna keep my pencil on the eyebrow area and I need a one line towards the temple area because हमारे eyebrows हमेशा temple area की तरफ जाने चाहिए. This is the temple area. If you don't know about the temple area, text me and then I can tell you what is it. यहाँ से हम लोग जाएंगे towards the tail side and this is the tail. So we got a cross here. So this is the point where our tail is supposed to end. But according to eyebrows, if you see our client's eyebrows is a little bit longer. So we will change the tail side also later on once we get our arch. Okay. So this is the first session where we got the three lines and the two crosses. Now we're going to go ahead with the second phase. We'll tell our client to sit up. Just sit up. Always remember we need to have right lines whenever we are working with the eyebrow mapping. तो symmetry होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप देखोगे this side is a little bit higher, this side is lower. So we had to adjust the alignment. I'm gonna use my thread. I'm gonna take a one line here towards the higher side and this is the lower side. So I know I have to lift this brow a little bit this side. Okay. So this is my top line. That I can call it an arch line. Then I need to go a little bit lower side here. यहाँ पे एक मैं line लूँगा. This line will based on the whichever the higher portion is, I'll do that. And then this is the middle line. तो इससे हमें पता चलेगा कि thickness क्या हो गया eyebrows की. So now if you see, I got these 2 points, 3 vertical lines, 3 horizontal lines, 2 crosses, and I got a skeleton of the brow. Now I will find the arch here. This is the golden ratio scale right now. Again, I'm gonna keep one point here, and then second point would be on the here on the, and then this is my arch. Same here.
always use a golden ratio scale to get the arches because it get easier for us. जितना हम लोग tools use करेंगे उतना हमें easy हो जाएगा. पहले के methods थोड़े difficult होते थे, find the arch and everything. With these tools it get easier and it goes very natural also. Now the next part is I got all the points. I got this point, I got the tail point, I got the arch point. What I'm gonna do, I'm just gonna connect all the points here from here to here and here to here. Same goes here on the lower side to the upside. अभी जब भी हम लोग नीचे का पॉइंट चेक करेंगे तभी याद रखना कि ऊपर का पॉइंट तो हमें मिल गया यहाँ से यहाँ तक, बट नीचे का पॉइंट जब भी हम लोग करेंगे तभी हमें थोड़ा लिफ्ट अप करना है टुवर्ड्स द आर्च पॉइंट, क्योंकि हमेशा याद रखना हमारा आर्च या फिर हमारा जो मिडिल पॉइंट है आईब्रोज का वो हमेशा थिनर होगा कंपेरेटिवली फ्रंट साइड. अगर फ्रंट से ज़्यादा थिक हो गया तो वो शेप अच्छा नहीं दिखता. मैंने एक स्केलेटन भी बना लिया थ्रेड के हिसाब से. नाउ दिस इज़ द वे आई एम गोना डू अ फ्री हैंड वर्क, क्योंकि हमें राइट शेप फ्री हैंड वर्क से ही मिलेगा. बट बिफोर दैट वी नीड टू हैव अ स्केलेटन कि कहाँ पे काम करना है, किस तरह से काम करना है वो आप. सी दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रेचिंग वाइल डूइंग फ्री हैंड वर्क, बिकॉज हम विदाउट स्ट्रेचिंग काम करेंगे तो हमारी क्रूकेट लाइन्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे है माई फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर इस ईयर, थंब से मैंने स्ट्रेच किया है एंड दिस इज़ अ 90 डिग्री टुवर्ड्स द स्किन. पेंसिल को देखो मैं बैक एंड फोर्थ कर रहा हूँ. बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी देखो मैंने धीरे धीरे मैं काम कर रहा हूँ एंड छोड़ रहा हूँ स्ट्रेचिंग, फिर से मैं पकड़ रहा हूँ एंड फिर से वापस कर रहा हूँ. तो इससे हमें पता चल जाता है कि शेप हमारा कैसे बन रहा है. जैसे मैंने पहले बोला था कि ये हमारा टेल पॉइंट है, बट हमें टेल थोड़ा लंबा करना है, तो वील गो लिटिल बिट लॉन्गर like 0.2 mm and then we'll work on the upper line. Back and forth is very important here. Always remember, whenever you are working with the outlining and whenever you are creating a tail should not be lower than the front part. अगर इससे नीचे आ गया तो droopiness आ जाएगा. So it can be in the same line or it can be higher than the front point. फ्रंट लोअर पॉइंट. तो ये जो एक्स्ट्रा हेयर है उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे एक्स्ट्रा हेयर निकल जाएंगे. ओके, सो वी आर डन विद द मैपिंग, बट ये जो एक्स्ट्रा हेयर है उससे हमें निकालना बहुत ज़रूरी है. आई एम गोना यूज अ ब्लेड. स्ट्रेच करो स्किन को एंड देन रिमूव ऑल द हेयर जो आउटलाइन के बाहर है. अगर आपका मैपिंग सही है एंड देन इट इज़ इनटू सिमेट्रिकल पार्ट जो साइजेस के हिसाब से सही है, थिकनेस सही है, तो डोंट हेजिटेट टू रिमूव एक्स्ट्रा हेयर. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपका ब्राउज शेप बनता है फ्रंट इज़ ऑलवेज थिकर, मिड इज़ ऑलवेज गेटिंग थिनर टू द टेल साइड. तो यहाँ से थिक टू थिन जाता है. तो अगर आपको वैसे शेप बना है तो बेस्ट है. So as she also understood about the sizes, I'm gonna tell you that also here. See, this is a straight line here. Okay, this is more higher side and this was starting from here, so we just lifted like 2 mm up. That is why it has become more symmetrical here, you know. So our starting is starting from the same side. We removed a lot of hair from the lower side because this was the lower side. We lifted up. So यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे hair growth निकाले comparatively this. So we had to lift it from the front side. अगर front से हम लोग lift up नहीं करेंगे, it is gonna give you that angrier look. You know, when you do this, you know, you get a lot of domination here. That we had to remove it. And then this side we had to lift up again because this is supposed to be lift up because यहाँ पे जितना eye के around जितना ज़्यादा open space होगा उतना वो अच्छा open लगेगा. This is what we need, okay, and that's what we are doing. So this is the outlining right now. I'm gonna work inside this. So eventually it is gonna look more fuller and more darker today. And once it heals, it's gonna look more beautiful. Let's do it. I'm done with the mapping. Now it is time to get the colors. So I have made all the colors here. Can you see here is a little bit orange tinge, red tinge. That I have added a modifier. So if you don't know about a modifier, you should follow me on Instagram. I have made a video about that, or maybe text me on Instagram. I will help you out what is modifier and how does it work and why we should be using a modifier for any colors to use. All the way we are not using any black because black we cannot use it. Black अगर use करेंगे तो it is more on the cool tone. So it is gonna give you that grey green tone जो हमें नहीं चाहिए. हम brown use करते हैं, but brown के भी n number of shades आते हैं. So according to the Indian skin, according to the Indian skin tone and type,
ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, उसके हिसाब से हमें कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए हम हमारे बैच में बताते हैं. इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट द कलर थ्योरी ओनली, वी हैव अ सेपरेट बैच फॉर ओनली फॉर कलर थ्योरी, और यू कैन गो विद द कंप्लीट मास्टर क्लास फॉर द ब्राउज विच इज़ फॉर 5 days, जिसके अंदर हम लोग माइक्रो ब्लीडिंग, ओम्ब्रे पाउडर ब्राउज, कॉम्बिनेशन ब्राउज, कलर करेक्शन, इसके बारे में सब कुछ नॉलेज देते हैं. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी पिगमेंट ले रहे हो मिक्स करो अच्छे से. wanted to use 2 colors but now according to her brows and according to her skin I'm going to use one more color, so I have 3 colors here, so I'm mixing it nicely. एक blend अच्छा बन रहा है, and this is the color tone that I can see here. It's a really good rich brown color which gonna match with her skin tone. Okay, again coming on to the needle part, I'm using a 1RL. There are different 1RLs. Configuration is very different. Here 1RL is like a 1 needle, but I'm using a 35 1RL as because she has a thick structure for the brows and I would need pixels to be more prominent, so I'm using that. So I'm using a 1RL which is 35 1RL, and then I'm using a needle. This is 2 mm out. So जब भी मशीन रन होती है, let's always use needle 2 mm out. This is our numbing. So not a lot people know what is numbing also. This is a secondary numbing. I have not numbed her brows yet. Okay? I'm gonna work directly on the skin and then I'm gonna numb it. Once I open the skin, then I'm gonna use the numbing. So this is my way of working on the brows, because मुझे लगता है कि अगर हम लोग pre-numb कर रहे हैं with the Prilox or something, the skin texture get changes and it get very soggier, and then वहाँ पे जब भी हम लोग pigment use करते हैं तभी it don't stay that well. That is why we don't use, or I don't use particularly numbing for the first part, and I directly go with the 1RL on the skin. It is not gonna pain honestly, but there would be some slightly scratching effect on the skin. As we are working on the first layer of the skin, so we have to go very light-handed. So let's just start with the procedure. So कितने effortlessly मैं काम कर रहा हूँ अभी, because I'm not putting any pressure with my machine or needle. I'm just working on the first layer. The key point in this is वर्क विद द लाइट प्रेशर बट मल्टीपल टाइम. एक ही प्रेशर से आप मल्टीपल टाइम काम करोगे तो आपका जो पिगमेंट है वो ऑलरेडी स्किन के ऊपर आ ही जाएगा. एंड वी डोंट वांट वेरी डार्क लाइन, वी वांट वेरी लाइट लाइन जिससे हमें शेप सेव कर सकते हैं. एंड देन वी विल जस्ट शेडिंग इन बिटवीन, कमिंग टू द आर्च पॉइंट टिल हियर एंड देन चेंजिंग इट हियर. सी कॉन्फिडेंस इज द की, बट उसके पहले आपको प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है. अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, यू नो व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द स्किन, वेयर टू पेनिट्रेट, व्हाट प्रेशर शुड बी यूज, इट इज़ गेट वेरी इजी. अभी देखो यहाँ पे मैं फ्रंट पे लेके आ रहा हूँ. सो दिस कैसे मैं फ्लिक कर रहा हूँ टूवर्ड्स द फ्रंट, बिकॉज वी नीड फ्रंट टू बी मोर सॉफ्टर लाइक दिस. Can you guys see here a little bit reddish spots? That is our body plasma. मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम लोग आईब्रोज करते हैं बट उसमें ब्लीडिंग होती है. ब्लीडिंग कभी नहीं होती है आईब्रोज के अंदर. इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू डीप जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है. हियर वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन. दैट इज़ वेयर दिस इज बॉडी प्लाज्मा इज कमिंग, and the body plasma has some blood particle, that way it looks red, but it's supposed to be a body plasma, and that will always come if you work on the right skin. So if you are working on the epidermis, you will get this. If you are going deeper, there will be bleeding. So अगर आप bleed कर रहे हो तो it means your pressure is too much. Same procedure I'm gonna do it on this side also, working from the tail side and coming in the front. See, I'm cleaning our first pass. See, ये सिर्फ और सिर्फ 1 pass हुआ है. Now you can see the pigments also, pixels also here, and I have not even used any numbing. You know, this is without the numbing. And let's just ask our client, did you feel any pain while doing it? Slight, but it's okay. Yeah, so it is variable. You just need to go light-handedly. That's why. Okay, so I'm gonna put the numbing here. So this is my numbing. It's a blue gel. I'm putting it here. This numbing works only on the open area. Cool. So you guys can see this is our 1 session, 1 pass, and this is 2 passes. So you can see the difference. This is more darker. And now what I'm gonna do, I'm gonna work on this eyebrows, make it more same like this. Always remember, whenever you are doing ombre powder shading, work with one side first, see the tones, and then match with the other side. So we are done with the